Sir, we'll start off in next 1 minute. Sir, you are on mute. सर आप म्यूट पर हैं सर, म्यूट पर हैं सर. सर म्यूट पर हैं आप. Hello students. So good evening all, good evening, Jai Hind. So in today's session, we'll be conducting our first group discussion mock. So all of you who have joined us on YouTube also, would request you to please do share this session with your friends. बाकी सभी students जो आज हमारे साथ इस mock GD का हिस्सा बनने वाले हैं. Sir, am I audible? Yeah, you are audible. चलिए. So सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ आज इस सेशन का हिस्सा बनने वाले हैं, ठीक है, दे आर ऑल हियर. ओके. Okay, so for others, am I audible? Vishal, Harshvardhan, Vineet, Nitish, Kritika. Sir. Am I audible? Yes, Just give the Yes, thumbs sir. up. Yes, sir. Just give the thumbs up. Done. ठीक है. So, sir, let us start off with this session. अच्छा. Before starting off with this session, I would request you to please switch on your cameras. Okay, so if possible, please switch on your cameras. No problem, Sharad. Without wasting any further time, let's start. So the other students who have also joined us on YouTube, please do let me know in the comment section that am I audible? Voice and video, is it clear? Bachcho, just give the thumbs up. He will understand it. नहीं सर YouTube पर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जल्दी से बताइए. ओके, सो थिंग्स आर क्लियर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट ऑफ आवर सेशन टुडे. Okay, so all of you who have joined us in this session would request you to please do share it with your friends and do not forget to like it. चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे and will conduct it in the manner as it is conducted in the GTOs. Okay. So the topic for this group discussion is biggest achievement of PM Modi's US visit 2023. So is it improved diplomatic relations? Second, enhanced cooperation in defense. Third, countering China and Pakistan. So I'm repeating my topic. The topic for today's group discussion is biggest achievement of PM Modi's US visit 2023. Is it improved diplomatic relations? Second, enhanced defense ties. Third, countering China and Pakistan. Second is enhanced cooperation in defense, and third is countering China and Pakistan. You may all start now. So friends, in my opinion, the India-US visit, this has countered China and Pakistan very well, as India is the biggest democracy and USA is the oldest democracy. So a meeting between these two countries will obviously help in countering China and Pakistan, both the countries. In my opinion, defense cooperation has improved a lot over the period of 2 decades, 20 years. We have seen that we have procured so many helicopters and fighter and utility helicopters from USA, as well as this time we are procuring drone and also F414 engines for our aircraft. So it has been a wonderful defense cooperation in my opinion. So India is the biggest
India is the fastest developing country in the world right now, and China is the threat to the entire world. So, developing good ties with US will surely help us to counter China and Pakistan both at the same time. I In feel my the opinion, that defense partner will be the correct option, because we have seen that recently China counter terrorism. China influence in the border area has increased, and we can see that China has deployed lots of missiles in their border area. So we have to strong our defense portions also to counter the China, and we have seen that. India is working to make the defense equipment with the USA in a self-made, so that our import can be decreased from the USA also. So I feel the biggest achievement of this 2023 visit, like PM Modi's visit to America, is majorly the diplomatic relations. Only the diplomatic relations have improved, not the defense ties right now. And I don't think we have any cooperation or help from the America side in countering China and Pakistan terrorism or else the border issues. Because in history, if you have observed, America did not kind of help India or made us uh, counter the terrorism I would from like to say here that they USA actually very well knows that to counter China in Asia, India is its only way so that it can counter China. One So more, the ties between one India and US will surely help to suppress China in the Asia region. one more major Even aspect we is have seen about, that we have seen that we have been procuring more than 50% of the things from Russia as well as Israel. We have been procuring tanks as well as for navy. We have been procuring submarines. So in order to decrease the dependency majorly on Russia and on the Israel part also, we have been procuring from USA, so that our distribution remains well balanced overall the world. even we have seen that USA influence has increased in the South China Sea, in the area of Japan and Philippines. Recently, USA has made four headquarters of army in the Philippines to counter the China. So it is good for USA also to tie a relation with the India, because in USA also want to counter the China in the South China Sea. I agree with Aarti what she said. If USA made a good relationship with India with respect to international relations and with respect to defense, then in India there is South China Sea region and Indo-Pacific region where, with the help of USA, India can tackle situation there. So I would defense like ties. to say here that the meeting of the two biggest nations at the world level will very clearly send a message to the entire world that India and USA are moving towards a friendlier path, and hence they will improve their friendly relationships in the coming time. So this will obviously help us in countering China and Pakistan in case we have to face a two frontal war in the coming time. I feel As we America know is that like a Russia split is the tongue. biggest importer of the defense to the India, and USA want to counter it. USA want to become the biggest importer of defense to India, so that India dependence on the Russia can be decreased. And we have seen that we have buy Su-30 from the Su-35 from the Russia, and we can say that USA don't like Russia a lot, and Russia and USA is totally depend on India to counter the China. I India's don't the have any oldest friend confidence of on the India has America been Russia. because But I feel recently, like Russia America has is been actually helping Pakistan and China, both of these countries. So we cannot trust Russia when it comes to the when it comes to China. So USA will be our best option in case we need to counter China. So this way we are countering China very well. but I Yeah. don't have any confidence in America. I feel like America has a split tongue. It never actually helped us in the history. Also, when you talk about the terrorism which got created, Pakistan, America itself funded the terrorism so that it can do whatever bad ideas it has. But I don't have any confidence in America. The only achievement is diplomatic relations. The people who are going here from here to there, migrating and for study and jobs, they will have better transitions. You can say you don't need to worry about the visas. You don't need to worry about going back if once they come back to India. So those kind of relations are only improved right now. I am hoping for the good, but right now that's the only thing which I have confidence in.
In my Yes, agreeing with the Harsha, that Like now to all those candidates who have not spoken so far, kindly they push them to speak. I can see there are few of you who have not. You have not opened your mouth. Bhumi, you have not opened your mouth. All those who have not spoken, please come out and speak. Continue. Continue. yes, So I during the was just saying that 1960s and adding a plus 70s, point a in the mission Harsha was point that conducted. he said that USA is a USA has a tongue slip. We can say that when Mr. Obama was the president of the USA, Obama doesn't give the much importance to India. Even we invited Obama in our Republic Parade also. After the when Obama was the president, he was willingly to form a G2 group with the USA and China. So we can clearly say that. In the past, USA don't have the good relation with India, and the USA don't want to be the partner with India also. But in my recent time, we have seen that after the new presidents of the USA has came. They have shown lots of interest in India, and we can see that India is the fastest growing country in the Asia. So lots of country are reliable on India too. continuing the artist point, in my opinion, in international relations, it's all about number one economy, and it's all about second thing military. When we have the military and when we have the economy, then we emerge as a global power or even the regional power in and around the world. So when we are in a dire need of the engine. For example, like F4 and 4 engine for all of aircraft. Our aircraft have been powered by the exported from USA. So if we get the technology, the defense technology, technology which we want, then only four nations are there in and around the world which have their own engine technologies, which we don't have. So if we procure that from Russia, that will be a huge game changer for us in the aspect of aircrafts. I would I like think to put forward one point here that during the 1965, the CIA from USA and Indian Army planned a mission against the China. They planted a surveillance device at the hills to counter the China. So same way, in the present time, USA and India will surely take steps to counter China because it is the biggest threat in the world right now to the entire world. Since the spy balloon incident, the relation between the USA and China have worsened and are still degrading day by day, leading one of the reason to which is the Taiwan incident also. So making ties and improving ties with USA will surely help India in the coming future. I also want to highlight one point about the defense relations of India and America. We don't have any big major transactions going on to buy equipment or sell equipment, and especially America till now, it kind of did not let that happen. Okay, it did not let India to get the equipments from America, and now it realized the importance of India, that it has become a big global economy and it has a major influence in the Southeast Asia, that region. And I also do not want to want us India to depend on any other country for you can say countering the terrorism or for the equipment majorly. Like for example, the recent HAL Tejas, which is like Indian made fighter jet. So I want India to be self-dependent, not depend on even Russia also for the defense equipment. Yes, recently India has been focusing a lot on self-dependency when it comes to the defense sector. India has been, like mentioned by Harsha, India is manufacturing Tejas. Also, it is working on the MK jet. So I don't think that defense sector would be the major part when it comes to USA. India is focusing more on the self-independency in that region. Yeah, if we talk about the self-independency, India is not depend on other country. We can take the example of South Korea also. Like South Korea has said that they will not make a nuclear missiles, and they will be asking USA to protect them from the China if in future they had. So by this we can say that India don't have to beg in front of any country to save our borders or save us from any country. So we can say that we are independent in terms of everything. If we talk about the defense equipment,
So lots of people have mentioned that Russia will be the good partner, and it is proven by the Russia also that it's been since when it be the Kargil war, Russia help us in this, and every time whenever India needs any country help, Russia was there. Even we have purchased the crude oil from Russia when lots of country have mentioned sanction on the Russia. We have show that no matters what is happening in the world, we will do our business. So we can say that for India, a business came phase first, and the material which Indian citizens are dependent, that come first. So if I want to summarize the points of my decisions and the points which I've picked up from my fellow friends, the diplomatic relations have definitely improved between America and India, and diplomatic relations in the sense like trade, you can say. So the trade will happen more, I feel, and the technological transactions also will happen more. I want to state one line which I've picked up from an interview of Dr. Jaishankar, who is the foreign minister of India. So he recently said that the Silicon Valleys of America are much more interested in valleys of India right now. They want to invest in India. They want to come to India and do everything related to India, because India is kind of like the hot cake right now. So the diplomatic relations are definitely good. That's the biggest achievement. And if you talk about the defense ties, I don't think there's any much improvement, and I don't want any improvement also with America. And finally, the countering of China and Pakistan. Maybe America realizes its like India's importance right now, and tries to be an ally for us, and maybe support us in the UN or any kind of conflict in the future, which we'll have with China and Pakistan. Harshvardhan, I beg to differ from your point. Your point are majorly valid, but when it comes to relationship defense ties with USA, since we should not forget that we are a part of US. We are a part of Quad. With US is also part of Quad, and US, Australia, India, and Japan are four of the countries are operating in the region of South China Sea. So, and we also know that USA is focusing majorly on Indonesia, Malaysia, Vietnam, etc. Those countries also for its own growth and development. USA. So, in this aspect, if we want to, and USA also knows that India has a closer ties with Russia, very close ties with Russia. So, in this aspect, to counter China specifically, US would want that India should be closer to USA as well. So in that aspect, having a defense ties with the USA is one of the major aspects to operate and to function coexistently in the area of South China Sea. That I feel. Sir, let's give the feedback, sir. Okay, before I give the feedback, let me tell you for the benefit of the entire group, when we do a GD, it is an open-ended discussion. There is no need to close it. So, Harsh, when you said I would like to summarize, in GD a summarize, we never summarize. Okay? So, just remember that it is summarizing is not done. It's an open-ended discussion. You can talk for or against. No problems about that. Sir, even though the points that were being shared by Harshvardhan were valid, but yes, but you need not say that let us summarize, let us find summarize. out. Avoid that. Okay. Now, all of you are talking about cooperation. Let me tell you about Santosh talk about defense cooperation. Aarti spoke about defense cooperation. Aarti, Santosh, both were talking in favor of defense cooperation. Okay. And Vishal was talking about democracy and neutralizing China and Pakistan. Now, gentlemen, Aarti and Santosh, आप संतोष बहुत देर में लेके आया पॉइंट क्वाड का, बट व्हाई ओनली क्वाड टुवर्ड्स द एंड? व्हाई कुडंट यू ब्रिंग इट अर्लियर? व्हाई कुडंट यू ब्रिंग इट I2U2? I2U2 की कोऑपरेशन जो हमारी चल रही है उसको भी लाना था ना. Now you see, this is what tells कि if you're talking in favor of defense,
Then you did talk about missiles and all, but tell them that we have got Chinooks from them, we got Apache from them, we are going to buy Predator from them, we are going to buy P4114 engine from them. We are doing constant exercises in the Bay of Bengal, in the South China Sea. So then when you're talking about in favor, start giving facts which can be easily, in a minute, they can be registered and leave an impact on what you're talking. Are you both getting it, Aarti? Yes, sir. Santosh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. आपने बात करी कि हम रशिया से भी बीच में संतोष did went toward Russia and Israel also, but remember हमने रोमियो हेलीकॉप्टर भी वहीं से लिए. We bought our AH-60 our helicopters for the Indian Navy from them. Yes, sir. Already 2 Sea Guardian Pelters are there with Indian Navy. Okay, if we buy more, that's a different question. Deal कैसे होती है? But when you're giving facts, start giving facts. थोड़ा सा आपको help करेंगे. Sure, sir. Harsh was talking about diplomatic relations. Harsh ने throughout diplomatic relations के बाद ने बात करी. Towards the end, he was talking about our external affairs minister. Your points were valid. I'm not denying, because like I said, you can talk on any one of the leads. Whatever points you gave as far as your thought process was concerned, they were valid. But why not to bring what Mr. Shankar said much earlier? Why towards the end? So if you have got some concrete facts and figures, try to put them as early as possible. Here you were all able to get a chance because many of us were not speaking. But try to bring out the points which you want to bring out as early as possible. Vishal, when you started talking about neutralizing Pakistan and China, आप उसमें बोलो ना कि हमने क्वाड क्यों बनाई? The quad was made to counter presence of China. तो उसको लाना चाहिए ना. तो ये जो चीजें है ना, they leave ये लगता है कि हाँ आप डेप्थ में पढ़े हैं, and then you're talking about it. Okay. When you say Predator खरीद रहे हैं हम, Predator is capable of completing the entire border along the China as well. LOC और LAC दोनों को कवर कर लेगा, क्योंकि हम इसमें एयरफोर्स के लिए भी ले रहे हैं, आर्मी के लिए भी ले रहे हैं. So bring those facts. जितना आप फैक्ट्स डालने शुरू करो, आप न्यूट्रलाइजिंग चाइना एंड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, ट्राई टू ब्रिंग इन. अभी इंडिया ने अमेरिका के साथ एक सऊदी अरेबिया में ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान हमने एक्सरसाइज करी. ब्रिंग दैट एक्सरसाइज. आप बता रहे हो ना, वो क्यों करेगी? क्योंकि इट विल न्यूट्रलाइज द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज इन द ग्वादर पोर्ट. So when you start giving these facts and figures, your points become much more stronger and valid. Okay. I can see Sharad want to say something. Sharad, please go ahead. अच्छा, सर ने सारी चीजें बताई, बट कुछ एक वैल्यू एडिशंस में जो देना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट डिविएट फ्रॉम द लीड्स. हाँ, जैसे आरती ने डिस्कशन शुरू किया और वो कोरिया तक पहुंच गया, तो अल्टीमेटली आप सभी लोग आरती के साथ डिस्कशन में विशाल भी आए, एंड both of you had deviated from the actual leads that were given to you. Okay, so please do not form new leads or deviate from the actual leads. ओबामा भी कोई जरूरत नहीं थी उनकी. और उसके साथ साथ जब भी ये जीटीओ में जीडी होता है, उससे पहले बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन जीटीओ देता है कि सर प्लीज करेक्ट मी इफ देयर इज रॉन्ग. वहां पर जीटीओ बहुत क्लियरली बोलते हैं कि दिस इज अ जनरल डिस्कशन दैट टेक्स प्लेस ओवर अ कप ऑफ कॉफी with amongst friends in the canteen or over any place. Okay, so first of all, please do not make it a debate. अब आपने यहाँ पर सर डिस्कशन में एक चीज मैंने नोटिस करी कि अराउंड 7-8 स्टूडेंट्स वर देयर, बट आफ्टर 4 or 5 minutes they had nothing to discuss. थोड़ा स्लो हो गए सर, स्लो हो गए, टेम्पो हैज गॉन डाउन, उनके पॉइंट्स खत्म हो गए. ठीक है, और उसका मेजर रीजन ये था दैट all of you had picked up only one point and you chose to speak only around that point. यहाँ पर ये जनरल डिस्कशन है, यहाँ जनरल डिस्कशन में आप तीनों पॉइंट्स के ऊपर बोल सकते हैं. ओके, और तीनों पॉइंट्स पर बोलने के बाद आप अपनी तरफ से
आप मतलब आपको 3-4 बार बोलने का मौका मिले तो आप उसमें ये भी बता दो कि इंप्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या हुआ, आपके एनहेंस्ड कोऑपरेशन इन डिफेंस में क्या हुआ, काउंटरिंग चाइना पाकिस्तान पर क्या डिस्कशन हुआ, और फिर आप ये बता सकते हो कि बट इन माय ओपिनियन आई फील दैट द ग्रेटेस्ट टेक अवे और द बिगेस्ट अचीवमेंट इज द एनहेंस्ड कोऑपरेशन इन डिफेंस। ओके, तो यहां पर आप अगर सारे पॉइंट्स के ऊपर बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स टू स्पीक। सेकेंडली, GTO will also observe that the candidate has got an in-depth knowledge of every topic, ठीक है, और आपने जो अपना पॉइंट देना था, ठीक है, आपके हिसाब से क्या सबसे जरूरी था वो भी बता सकते हैं। सर हर्षवर्धन ने, मेरे हिसाब से हर्षवर्धन ने इसमें काफी 2 पॉइंट्स के ऊपर बोला था, और बट फाइनली इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट लेट मी समराइज दिस डिस्कशन, यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट टेक अवे और द बिगेस्ट अचीवमेंट इज दिस। तो ध्यान रखिए कि यहां पर ना आप सभी पॉइंट्स के ऊपर बोल सकते हैं, और उसके बाद अपनी लास्ट में प्रायोरिटी तीनों पॉइंट्स के ऊपर बोलेंगे। एक तो आपके पास बोलने के लिए ज्यादा सामान होगा, ओके, और लास्टली यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू लिंक योर पॉइंट्स विद एवरी अदर ग्रुप मेंबर। अगर आप कोई एक पॉइंट पकड़ लोगे तो आपके पॉइंट को कोई दूसरा काटेगा, आप दूसरे के पॉइंट को आप काटोगे। जैसे संतोष ने 2 बार कहा कि आई बेग टू डिफर करने की जरूरत ही नहीं थी, यहां पे डिफर करने की जरूरत नहीं थी, आप उसमें वैल्यू एडिशंस दे सकते थे, ठीक है, और यू कुड हैव प्रायोरिटाइज्ड व्हाई योर पॉइंट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो ऐसे मौके पर कोशिश कीजिए कि किसी को काटने से अच्छा है आप उनके पॉइंट में वैल्यू एडिशन दे दीजिए। और अगर आप इतने लकी हैं कि एक्चुअल जीडी में आपको 4th-5वीं बार बोलने का मौका भी मिल जाता है, ओके, तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट है कि आप वहां पर फिर आराम से ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी the biggest takeaway or the biggest point is this, so prioritize your knowledge। यहां पर आपको अपने नॉलेज, अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए इंस्टेड के आप इस डिस्कशन को डिबेट बना दें। और उसके अलावा अगर आपके पास 4 पॉइंट हैं तो आप वेट, आपके पास 10 मिनट है, आप पहला पॉइंट पहले मिनट में रखिए, दूसरा पॉइंट तीसरे मिनट में रखिए, तीसरा पॉइंट 6ठे मिनट में रखिए। उससे क्या होगा, योर पार्टिसिपेशन विल कंटिन्यू, ये भी याद रखना। और आपके पास पॉइंट्स कम है तो आपने देखना है कि मैंने कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। अब विशाल ने एक और ऐसी बात बोली थी जो डेविएट, मतलब टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, जब जिसने 1965 जो हमारी न्यूक्लियर डिवाइसेस फिट करने की बात कर रहा था। अब नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आपने ऐसे बात करी, जब आपका कमांड टास्क होगा, जीटीओ के दिमाग में रहेगा तो वो पूछेगा, ओके विशाल टेल मी समथिंग, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट डिवाइस इन 1965। और अगर आपको अब इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो स्टिक टू द टॉपिक। नहीं, और सर मैंने मतलब एक और चीज नोटिस करी कि अब जैसे अगर किसी ने नए पॉइंट पर बोलना शुरू कर दिया और किसी ग्रुप मेंबर को लगा ना कि यार ये जिसने जो नया मुद्दा उठाया ये भी अच्छा है मुद्दा, मुझे आता है, तो वो उसी पर बोलना शुरू हो जाते हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, मतलब आपको जो लीड दी गई है उनके अलावा आप मतलब इमरान खान या बेनजीर भुट्टो किसी पर डिस्कशन कर दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बीच में डिविएट नहीं होना है किसी को। ओके, लेट मी टेल यू, एज फार एज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट वाज कंसर्न, जितने जने भी बोले, लेट मी टेल यू, हर्ष बोला, विशाल बोला, संतोष बोला, आरती बोली, these 4 were the active participants of our discussion today. Your communication skills were good, you were talking with confidence, and not even once did I find any one of you fumbling कि आपने शुरू कर दिया and then you're looking for a what you want to speak। कई बार ऐसा होता है, बच्चा एंट्री ले लेता है और अपना पॉइंट पुट नहीं कर पाता। Luckily among 4 of you I didn't find any of those traits। While delivering I could make out you are talking with confidence। मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगा that you are searching for data or words। So that's a good point, that's a good thing। हाँ शरद, आपको कुछ और कहना है? सर यहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट्स रहे डिस्कशन में, जैसे कृष्णा, नीतीश और भूमि शी इज नॉट इन दी कॉल, बाकी सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज यहाँ पर सजेशन देना चाहूंगा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस तो इंपॉर्टेंट है, ओके, बट आप अगर देखेंगे बाकी स्टूडेंट्स क्यों कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव्ड थे, अच्छे थे। तो आप लोगों में जो झिझक थी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका एक कारण शायद ये था कि आप लोगों को लगा कि यार ये सब लोग ना कॉन्फिडेंस से जैसा भी बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पा रहे हैं, हम शायद नहीं बोल पाएंगे। ठीक, तो सर मैं तो हमेशा से कहता हूं कि एसएसबी इंटरव्यू में अगर इंग्लिश इंप्रूव्ड है, इंग्लिश में आप सिर्फ अपनी बात आसान भाषा में समझा सकते हैं दूसरों को, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इट विल बी अ मोरल बूस्टर फॉर यू, ठीक है, और आप किसी भी एक्टिविटी में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी से जिन्हें भी किसी प्रकार से लगता है कि सर कोई दिक्कत आ रही है, सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। सर आई हैव ओनली वन थिंग टू ऐड हियर, बच्चों ये बढ़िया क्लासरूम होता है जहां पे आप सिर्फ एक दूसरे को वीडियो पे देख रहे हैं, यू मे नॉट कम अक्रॉस ईच अदर, तो आप अपनी हेसिटेशन को यहां रिमूव कीजिए ना, ट्राई टू इम्प्रूव इट, कुछ नहीं जाएगा, आपको प्रैक्टिस होगी, आपका जो डर है वो यहां निकलेगा बेटा। ट्राई टू यूज, व्हाई आर यू टेकिंग दिस कोचिंग, यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर आप बोलेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं, तो आपकी वो कमी पूरी कैसे होगी, हाउ विल यू ओवरकम इट। अब आधा बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, आई डोंट केयर, आप पहली बार शायद 2 वर्ड बोलें, हो सकता है तीसरी बार आप 5 वर्ड बोलो, एज पर मी देयर इज एन इंप्रूवमेंट। अगर आप चुप रहोगे देन इट विल नॉट बी दैट ग्रेट। और यहां पर तो मतलब आपको अराउंड 7 to 8 स्टूडेंट्स में झिझक हो रही है बोलने में। मैं आपको बता रहा हूं कि एसएसबी इंटरव्यू में सिचुएशन विल बी वेरी ब्रूटल, योर कलीग्स विल बी रूथलेस, ओके। मतलब यहां पर तो अगर आपको आता है, आप नहीं बोल पा रहे, आपने देखा कि बहुत ही मतलब एक शांतिपूर्वक माहौल में सब चल रहा था, पर वहां तो इतना रूथलेस होगा डिस्कशन कि आपको आते हुए भी कई बार ऐसा होगा कि आपके पास पॉइंट्स होंगे बट यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक, ओके। तो इसीलिए धीरे धीरे ये जो मौका है इसका फायदा उठाइए। और बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं, आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड इन अ गूगल फॉर्म इन दी यूट्यूब चैट, सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दी डिस्कशंस, अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, ओके, आप भी प्लीज फिल अप दी फॉर्म, ओके ओके। तो आप भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो डू गुड, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दी नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस, ओके। यहाँ पर जो बाकी सभी लोग हैं उनके अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप पूछ लीजिए, एल्स विल बी वाइंडिंग इट अप। बच्चों हम्बल रिक्वेस्ट, हम ऐसे और भी लाते रहेंगे आगे। पार्टिसिपेट एंड क्लियर, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतनी आपकी हेजिटेशन कम हो जाएगी। गो अहेड आरती। Sir, I have a doubt related to leads. Like you said that I was deviating from my leads. So should I stick to one lead, or like in the end of the conversation I can choose? I can merge 3 of the lead also. तीनों को मर्ज तो करना ही नहीं है। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में आपसे पूछा है कि विच इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, तो आप डिस्कशन के बीच में तीनों पर बोलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द डिस्कशन यू हैव टू प्रायोरिटाइज दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। आपको ये प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है ना, आपसे पूछा गया कि आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, एप्पल, ऑरेंज या मैंगो, और आप बोलेंगे मुझे तो तीनों अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप तीनों की खासियत बता दें और एंड में बता दो कि आपको कौन सा पसंद है। Okay, sir. Sir, I have a question. When we are putting our points and at the same time, I think two people put their points at the same time when I am speaking. So can I say them gently that gentlemen, let me finish my point. Afterwards, you can put your point like that. Or what can सर इसमें पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। ओके बच्चों, nobody will listen जब आप कहोगे ना, because everybody wants to make it a point. Don't worry, you are not. आपको जो आप पॉइंट बोल रहे हैं, that is being observed by some third person also, and there is a GTO. आपका एम होना चाहिए, आप जब वो बीच में डिस्टर्ब करें तो इंक्रीज योर पिच, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ाइए जिससे कि आप और मोर ऑडिबल हो जाए। डोंट बी रूड, डोंट बी डिसकर्टियस। जेंटलमैन लेट मी फिनिश, एक बार बोल दीजिए, नहीं बोलते अब अपना पॉइंट रखिए
और चुप हो जाइए. But don't stop in between. Put across your point. Somebody is watching that you are trying to speak and you are being hampered with. Okay, एक बात याद रखना. Thank you, sir. Because Sharad. actually, I also feel the same thing, sir. I felt a lot of yes. sir. हर्ष, मैं आपको Sure, मैं sir. इसमें जस्ट बीच में एक बताता हूँ. Sure. यूजुअली सर, जैसे संतोष ने पूछा कि सर शुड आई आस्क देम टू स्टॉप, तो जैसा सर ने बताया कोई चुप नहीं होने वाला आपके वहां बोलने से. ठीक है, सब वहां पर सेलेक्ट होने आए हैं और सबको लगता है कि अगर आपने बोल दिया कहीं आप ना हो जाओ. तो पहली चीज तो ये कोई मानेगा नहीं, कंटिन्यूअस बोलिए. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें लगता है ना कि यार हमें कोई बोलने ही नहीं दे रहा, वो चुप होकर बैठ जाते हैं, फिर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते. देखिए, अलग से मौका आपके लिए नहीं आएगा. तीसरा, जो आप कह रहे हैं कि सर क्या मैं उनसे बोल दूं, तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वहां जीडी में सिर्फ ये कहते हैं कि लेट चेस्ट नंबर 4 स्पीक, 5 स्पीक, 10 स्पीक. तो प्लीज ध्यान रखिए, एसएसबी में आप रेगुलेट करने नहीं गए हैं. ओके, रेगुलेट करने का काम जीटीओ का है. लेट हिम रेगुलेट द एंटायर ग्रुप डिस्कशन. आप सिर्फ बोलने का मौका रखिए. ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा आप बोल रहे हैं, किसी और ने बोलना शुरू कर दिया. जैसा सर ने कहा, कंप्लीट योर पॉइंट, डू नॉट लीव इट इन बिटवीन. ओके, अच्छा, और वो थर्ड एक बहुत ही कॉमन चीज है, सब स्टूडेंट्स बोलते हैं आई एग्री विद चेस्ट नंबर 4, आई एग्री विद चेस्ट नंबर 5. ये जो एग्री करना है ना, बस एग्री करके मत छोड़ो, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन तो दो. करो. आप उससे एग्री कर रहे हैं, उससे मतलब वो कोई संसद थोड़ी है कि हाँ हम बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया. उस मुद्दे में कुछ वैल्यू एडिशन दो, तभी तो आपकी कुछ यहाँ पर एक्सीलेंस पता चलेगी, आपकी कुछ नॉलेज पता चलेगी. Thank you, sir. बताइए और कोई. हाँ हर्ष, यू हैड सम डाउट? No, sir, yeah, same thing. Like actually, I had this Indian Coast Guard like PSB like recently, just 1 week ago, and I faced a lot of issue in this only. The first day only, I got screened out in the PSB. In the group discussion only, that is a major point. Like because everybody jumped on like it's like a fish market. 15 to 16 people were there, and I was like, I was completely. No, this is the time. Don't get pressurized by them. Even if they are speaking, अब क्या होता है? Now in that group there are 5 or 6 of them speaking. You know that chest number 4, 7, 9, and 10 are speaking on a particular thing. Now to participate and keep them quiet for few seconds, you can say, I agree with chest number 4, 6, 9, and 10. The moment you use this word, they will keep quiet for a second, that as if they are getting a support. And then put your point across. It may be against them, but that will give you a very small window to enter, agree, and जैसे इसने कहा value addition, immediately put your value addition and come out. That is how you will have to break this fish market thing. Getting it? वहां पर अगर जाके सिर्फ आपको एग्री ही करना है कि तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है, वहां एग्री करने के लिए कोई जरूरत नहीं है. अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हमें कोई कुछ याद ही नहीं आया वहां पे, ऐसा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता कि जिसमें आपके पास कुछ बोलने कोई ना हो. और अगर आपके पास नहीं भी है तो पहले 2 मिनट चुप रहिए, बाकियों को सुनिए. जब आप बाकियों को सुनोगे, लिसन वेरी केयरफुली, बट अदर द स्पीकिंग, यू विल हैव एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स टू टॉक. रिपीट दोस पॉइंट इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर वे. Change the words, change the language, change the something, and put it across, because now you understand what they are talking. Is it clear? चलो चलिए, तो आई होप आप सभी के जो डाउट्स हैं वो भी रिजॉल्व हो गए हैं. ओके, मोर ओवर अगर किसी को यूट्यूब पर भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उन्हें भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू लेट अस नो. ओके, फेयर एनफ. ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. ओके, इसके साथ साथ हम रेगुलर ऐसे सेशंस हर वीक लेकर आएंगे. ठीक है, सो या तो कोशिश करेंगे कि ऑल्टरनेटिवली विल कम अप विद दीस सेशंस. एक वीक कुछ रिटन एग्जाम के अराउंड एंड द अदर वीक विल हैव समथिंग अराउंड एसएसबी इंटरव्यू. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट वीक जीत जो भी सेशन होगा, आई विल अपडेट ऑल द स्टूडेंट्स बाय मंडे. ठीक है, और अच्छा मैं यहाँ पर देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ना सर कमेंट में तो बहुत एक्साइटेड होते हैं ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, और एक्चुअली ज्वाइन करने कोई नहीं आता. नहीं, वो उनको डर है. उनको डर वही है कम्युनिकेशन का, कि अगर मुझे बोलना पड़ा और मेरी कम्युनिकेशन वीक है. हाउ भाई लोगों, यही क्लास है.
आज आपके ऊपर 2 जने हंस सकते हैं, पर अगर आपका डर निकल गया, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो गई, आपका फियर ओवरकम हो गया, टुमारो व्हेन यू आर सक्सेसफुल, they all will be crying and you will be laughing. See the difference what I am trying to say. This is the ground you have to learn. Remove your hesitations. Let everybody laugh on you. Doesn't make a difference. If you are successful today, you will be laughing. Okay. और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये दीज आर फ्री फॉर ऑल सेशंस. ओके, आप लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. गूगल फॉर्म जो है मैंने एक फ्लोट किया हुआ है चैट बॉक्स में. any one of you can fill it up, any one of you can participate. ठीक है, so these are free for all, so please don't worry. Okay, do participate and enhance, improve yourself. Okay, so this was all from our side. इसके अलावा अभी just after half an hour at 9:35 PM I'll be back with a daily current affairs quiz. ठीक है, 9:35 पर एक और daily current affairs quiz लेकर आ रहा हूं. So I would request every one of you to please come up, okay, and enhance your current affairs as well. So thank you all for joining us today. Thank you so much, sir. Jai Hind to all of you. Jai Hind. Jai Hind, sir.